Good evening, everyone, and a very warm welcome to you all. I'm very pleased that you could all join us for this session. I'm your host for tonight, and I serve as a manager at IMARHKMI. I hold a bachelor degrees in sociology and education and a master degree in English literature. Along with my professional diplomas in mental health and CBT, it is truly an honor to open today's session and to welcome such a diverse and engaged audience. We appreciate your time, your presence, and your commitment to personal growth and mental well-being. Before we begin, I would like to briefly introduce the dedicated team behind this event. Each member brings unique expertise, experience, and passion to the work we do, and together we strive to create a meaningful and supporting learning environment. Let's move to the team introduction slide. First of all, we have with us our president, Dr. Khadija Khan, gynecologist and women health specialist from New York, USA. Next is our beautiful chairman, Dr. Iram, board-certified pediatrician, child specialist, and wellness specialist, also in New York. Next is our esteemed director, Dr. Inayat Ullah, certified sex therapist, sexologist, mental health specialist, relationship and couple therapy expert, also from New York, USA. Now we have our public relation officer, Dr. Hina, medical officer, New York, USA. Our medical advisor is next, Dr. Marwa Akram, MD, psychiatrist, New York, USA. And our guest for tonight, HR country officer, Marwa Binti Tahir, clinical psychologist from Sialkot. Next is myself, Aliya, bachelor's in sociology and education, master's in English literature, diploma in mental health, and diploma in CBT from Karachi. Last of all, we have our lovely coordinator, Rabia Shabir, clinical psychologist from Lahore, Pakistan. Now, to officially begin today's event, I would like to invite our HR country officer, Ms. Marwa Binti Tahir. She is a dedicated clinical psychologist from Sialkot, Pakistan, and plays a huge role in organizing and guiding our professional initiative at IMARHKMI. Ms. Marwa, the floor is yours. सर आगे अपनी स्क्रीन पीछे कर लो. Welcome everyone of today our first workshop on collectivist family culture and healthy relationship. Good evening everyone. I am your guest speaker, clinical psychologist Marwa Binti Tahir from Sialkot, Pakistan. Before to start our first workshop, I just thank to my special guest from USA, Dr. David. He is joined us from today's first workshop. I warmly welcome to all of you, especially I'm just thankful to my US-based doctors team, Dr. Inayat Ullah, our director, Dr. Khadija Khan, and our special persons for today tonight. Now let's start the collectivist family culture and healthy relationship, our first workshop. Now let's start. Okay, collectivist family culture and healthy relationships is based on that. Today workshop is based on our family culture, our relationships, our mental health. So many people are here to learn and speak English or learn to speak and Urdu. Many people are here to join from USA, and many people are here to join our
from the upper Pakistan. So collectively, I can speak in Urdu. If someone cannot understand, my presentation will be here. You can read whatever I'm talking about it. So let's start our collectivist family culture and healthy relationship, our first workshop. So family culture and what is family culture and mental health? क्या कुछ इसके अंदर सबसे ज्यादा important है? First, what is family culture? Second, what is our mental health? How much it disturb to during when we handle over so many things, when जब हम अपने issues को manage कर रहे होते हैं, हम अपनी life के बहुत से stresses को deal कर रहे होते हैं, family culture को deal कर रहे होते हैं, और family culture कितना important है इन सब के लिए, और ये सब हमारी mental health के ऊपर किस तरह disturb करता है. उसके अलावा Western society, we are talking about the Western society, we are talking about the Asian lifestyle and myths and taboos. So let's start. What is family culture? Family culture is we live each other as a united, as a proper family in Pakistan or all over the world. पाकिस्तान में फैमिली कल्चर के हवाले से जो सबसे ज्यादा एक टैबू है वो ये कि हम सब के लिए ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फैमिली कल्चर हमारे लिए लाइफ में एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना. जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते होते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम फेस करते हैं, जिनमें ज्यादातर मेंटल हेल्थ है. उसके अलावा हमारे कुछ टैबूज भी बहुत ज्यादा हैं. हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कब होती है? व्हेन वी ब्रेक द ट्रस्ट. जब हम ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं और इस चीज को ब्रेक करते हैं कि हमारी जो फैमिली कल्चर है, वैल्यूज है, उसको हम नहीं रखते. क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तब भी बहुत से इश्यूज हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट कि हम इसको वेस्टर्न सोसाइटी और एशियन लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे देखते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटी. वेस्टर्न सोसाइटी के हवाले से एक बात बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो ये कि बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, उनमें फैमिली वैल्यूज नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. every culture is really matter. हर कल्चर, हर चीज में ये बात मैटर करती है कि हमारा जो चाहे वेस्टर्न कल्चर है, चाहे हमारी एशियन कल्चर है, उसमें फैमिली वैल्यूज एक जैसी ही हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिथ्स एंड टैबूज. द मिथ्स एंड टैबूज इज रियली मैटर. बहुत से टैबूज ऐसे हैं जो मैटर करते हैं इस हवाले से. सबसे ज्यादा जो मिथ्स और टैबू मैटर करता है वो ये कि हमारी लाइफ में, हमारे कल्चर में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कॉमन है. कॉमन में सबसे ज्यादा ये है कि हमारे लिए क्या मैटर करता है, ये नहीं कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से लेकर चलते हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एशियन लाइफस्टाइल. एशियन लाइफस्टाइल के हवाले से जस्ट आई एम a little bit to discuss a little bit वो ये कि एशियन कल्चर में बहुत सी कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ज्यादातर एशियन कल्चर में ज्यादातर ये बात है कि हमने किस चीज को कैसे डील करना है. ज्यादातर फैमिली कल्चर में, एशियन कल्चर के अंदर क्या होगा कि किसी ने किसी को कोई इशू कह दिया है, कोई स्ट्रेस दे दिया है, कोई बात करती है. ऑफ कोर्स ज्यादातर इस हवाले से ये बात होती है कि किसी ने किसी को कोई बात भी कर दी तो हम उसको पर्सनल ले लेते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. और इसके नेक्स्ट जो है आगे हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फैमिली स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड? हाउ मच इट इम्पोर्टेंट? ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज्यादा जरूरी है ये सब. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितना मैटर करता है. उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आपकी बहुत सी मिसहैप से बचाती हैं. आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली वैल्यूज में, आपकी रिलेशनशिप्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जितना ज्यादा मैटर करती है, जितना ज्यादा वो आपको सपोर्ट करती है, इतनी कोई चीज शायद सपोर्ट ना करती. बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम मोस्टली ज्यादातर हम इस वजह से मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं. वो ये कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो पाती. आई मीन अगर हम किसी से बात करें अपनी फैमिली में, अपने अंकल से, फादर से, अपने भाई से, बहन से, और भी हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब से जब हम बात करते हैं तो हमारे नजदीक ये बात मैटर करती है कि हमने किसी को कैसे बात डिलीवर करनी है. जब हम किसी को अपनी कोई बात डिलीवर करते हैं तो हमें ज्यादातर क्या इश्यू होता है कि हमारी बात का डिलीवर करने का वे ऐसा होता है कि वो बात मिसअंडरस्टूड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली स्ट्रेंथ भी डिस्टर्ब होती है, हमारी फैमिली बॉन्ड्स भी डिस्टर्ब होते हैं.
What is moral and ethical values and the healthy boundaries? Moral and ethical values, अगर मैं वेस्टर्न सोसाइटी के हवाले से बात करूं तो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज पाकिस्तान में जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज इन टुडे वर्कशॉप बोथ एशियन एंड वेस्टर्न सोसाइटीज मेंबर कैन ज्वाइन अस टुडे. हमें अमेरिका से भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किए, हमें पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किए, इसलिए मुझे दोनों वैल्यूज को एक साथ डिस्कस करना है. वेस्टर्न कल्चर में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि वहाँ की वैल्यूज, वहाँ की फैमिली कल्चर, वहाँ की बातें ये है कि वहाँ कोई किसी को प्रायोरिटी नहीं देता. ऐसा नहीं है. उन लोगों के भी बच्चे हैं, उन लोगों की भी फैमिलीज हैं, उन लोगों के भी सारे इश्यूज हैं और हर बात वो बिल्कुल वैसे ही लेके चलते हैं जैसे हम चलते हैं. मगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि अगर आप किसी बात के ऊपर खामोश हो गए, चुप हो गए, अगर आपने किसी बड़े को कुछ नहीं कहा तो इट मीन्स कि आपने उनकी वैल्यू की है, उनका अदब किया है. अब मेरे एक ईयर के करियर में, अब इतने साल से मैं पेशेंट्स देख रही हूँ, डील कर रही हूँ, उनमें मॉरल और एथिकल वैल्यू को फैमिली कल्चरल वैल्यूज के साथ कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, कैसे कहा जाता है. ये सब वो ये कि अगर आपको किसी ने कोई बात कही है, कुछ बोला है, तो इट मीन्स कि आपकी अगर मिस्टेक भी है तो यू जस्ट शट द माउथ एंड जस्ट ओबे टू एवरीवन. इट्स नॉट द मॉरल एथिकल वैल्यूज. जब मैं टैबू समिट की बात कर रही थी तो यही कह रही थी कि हमारे यहाँ ये टैबूज बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में. मिथ्स भी हैं, टैबूज भी हैं कि फैमिली कल्चर के अंदर आपको सही गलत बात बर्दाश्त करनी. बिल्कुल, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हेल्थी रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए, फैमिली स्ट्रेंथ को, फैमिली बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए ये मैटर करता है कि आप बहुत सी बातों को मे भी इग्नोर करते हैं. मगर जितना मर्जी आप इग्नोर करें, जो मर्जी करें, अगर कोई गलत बात है, कोई ऐसी आपकी वैल्यूज आपकी हर्ट हो रही है, आपकी प्राइवेसी इन्वेट हो रही है, आपकी बहुत सी वैल्यूज इन्वेट हो रही है, आगे हम जनरेशन गैप पर भी बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज आते हैं. अगर इस तरह है तो उन सब के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको हेल्थी रख सकें और हेल्थी बाउंड्रीज को क्रिएट कर सकें. ओके, नाउ व्हाट इज फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टैबूज. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे स्टार्ट होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर हमें बात करने का, डिलीवर करने का तरीका नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में जो केसेस आती हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर इनायत उल्लाह, ही इज अ कोच एंड मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, और इसके अलावा आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कोच थेरेपिस्ट एज वेल. मेरे पास जितने ज्यादा केसेस आते हैं, जो डॉक्टर इनायत के पास केसेस आते हैं, वो केसेस किस लिए आते हैं? वो ज्यादातर कपल इश्यूज होंगे फैमिली कल्चर के ऊपर कि फलां ने मेरी बात नहीं मानी, फलां ने मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया. साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम किस बात को कैसे डील करें, कैसे मैनेज करें. बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो फैमिली वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करना शुरू कर देती हैं बिकॉज हमारी ऑफ द लो कम्युनिकेशन स्किल्स. जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स लो होगी, हमें कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आएगा और बात को किस वक्त, किस तरह, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है और किस तरह डिलीवर करना है, अगर ये सब हम नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए फैमिलीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. आइदर वो कॉन्फ्लिक्ट्स, मोर ओवर हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो ज्यादातर कपल्स के दरमियान में आते हैं और उसके अलावा फैमिली वैल्यूज में कि सास की बात अंडरस्टैंड नहीं की, मदर इन लॉ की बात को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके अलावा साथ साथ हमने बाकी किसी और इंसान को वैल्यू नहीं दी, इसलिए उसकी वजह से जो एक फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. फिर हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इसमें, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे वो पाकिस्तान का कल्चर हो. हमारी इमोशनल वेलबींग सबसे ज्यादा एशियन कल्चर में इमोशनल वेलबींग बहुत मैटर करती है. बहुत ज्यादा ये कहा जाता है, बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि हम इमोशनली बहुत हर्ट होंगे. It's okay if someone can hurt you, if someone can disturb your psychological and mental health, it's okay, just leave it and move on. हमारे एशिया कल्चर में क्या होता है, नहीं फलां ने हमें बात की तो की क्यों, इतनी जरूरत की कैसे है. अगर ये सब बातें हम सोचने लग जाएं तो ये सब हमारी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा क्रिएट करते हैं. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से बचने का क्या तरीका है, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब किस वक्त क्या बात करनी है. Improve your communication skills as much as you can. And it's what is the marriage and stress? Of course, it's a huge topic, and the marriage and the stress is co-interlinked with each other. शादीशुदा कपल्स के दरमियान में जो सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं वो ये, इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो सबसे ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट है कि हमें फलां ने क्या बात कही है, फलां ने क्या बोला, किसने हमें क्या कहा है, किसने हमें क्या नहीं कहा.
ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। और अमूमन कपल्स में जो ज्यादातर इश्यूज आते हैं वो ये है कि दोनों कपल में वन मेंबर और टू अदर मेंबर दोनों के दोनों एक साथ अपने इश्यूज को बहुत ज्यादा इन्वेट नहीं करते, अपनी 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 जो उनकी प्राइवेसी है उसको इन्वेट कर देते हैं। एक दूसरे का फोन चेक करना, एक दूसरे की प्राइवेसी को इन्वेट करना, उसके साथ साथ एक दूसरे की बातों को इग्नोर नहीं करते। और अगर एक दूसरे की okay, now we are move on over the next slide is the generation gap. How generation gap is matter in aging, psychological stresses, cultural and social pressures, taboos and myths, and ethical boundaries and the values. What is generation gap? Generation gap is really, really important in our Western culture and the Asian culture as well. How aging matter most? Because when one person is interlinked with another one, as if someone has age of 50 years old or 65 years old and the other family member is the 22 or 25. Our forefathers and our family culture, is really matter, and mostly the aging issues is especially the okay especially over the aging and the issues is because it's due to our cultural values. Just a second. Okay. It's fine. Okay. Now we are talking about the generation gap. How generation gap is matter most? Generation gap is important because it's due to the cultural and family values. It's due to really matter most. Generation gap is when we do not understand each other, when we do not value our senior, when we do not value our person who is head of the family, because it's important we understand the head of the value person, head of the member, and head of the most of the person in our family member. And now I'm talking in Urdu because many people are joined in Pakistan as well. And how psychological stress is important in generation gap. How psychological stress is creating the generation gap, because we cannot understand the elder one of our family member. We cannot communicate with him or her as well as we can communicate with our same age gap. So, of course, generation gap is matter most, and generation gap is really, really matter due in the family culture and the healthy relationship boundaries. Now, how psychological insights? What is psychological insights? Now, how psychologically it's important. How psychological therapy is important in family culture, how it helpful to you to understand our family culture, our family boundaries, our healthy relationships, and how it matters. If an individual can interfere, can go to the psychologist, therapist, and the doctor, and he or she can claim that he or she cannot understand our cultural values, he cannot understand to handle the family, he or she cannot understand the relationship or the couple issues, whatever that is, it's because the family culture and the family values is important. So the psychologist, the therapist, and our team, IMARHKMI, the therapist and the Dr. Inayat and the Dr. Khatija Khan, Dr. Aliya, me as well, all of the team members is really helpful to you to understand the psychological stresses and how to handle through therapeutic treatment and through the counseling. Anger management and adult mental health. How anger management is really matter for the family culture and healthy relationship. For the family culture and the healthy relationship, how anger management is important. If you manage your anger, if you can understand your anger issues, if you handle your anger issues, and if you cannot handle or manage your anger issues, please go and visit the therapist mostly and go rushly, because many individuals can have anger issues. Our youngsters, our family members, our cultural values has already have rushly in so many issues. So if someone have an anger issue, mostly you have to go and first visit the therapist
mostly kindly get the counseling, therapeutic treatment to understand your values, understand your family issues, and to handle the relationships much better. Okay, now what is relationship counseling? In our team, IMARHKMI would present you the collectivist family culture and relationship activity, and then we all of the team members give a help for you to give you the relationship counseling, to give you the all the treatment regarding the counseling and the therapeutic issues. And we available for to give you the psychological help me as well. And what is cultural values? I'm just talking about a little bit in Urdu because cultural values is very complicated, and mostly it's complicated in Asian culture as well. फैमिली कल्चरल वैल्यूज पाकिस्तान में क्यों डिस्टर्ब हैं, क्यों सबसे ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं फैमिली कल्चरल वैल्यूज में? हमें स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है वो बहुत क्रिएट हो रही है. उसकी रीजन सिर्फ ये है okay, because our family cultural values is really disturbed due to the whole life of stress. When we suffer the stress, when we suffer the anxiety, when we suffer from every different values, every different culture, every different from we are from different culture, different background, different upbringing. We have a different upbringing. So because that's why we cannot handle our stress, we cannot handle our anxiety, we cannot handle our relationship issues betterly, or cannot handle these such issues. So if you can suffer any anxiety, any stress, any issue, you have to must to go to the psychiatrist, psychologist, or any mental health therapist. We IMARHKMI as an organization to present every relationship issues, to deal in every relationship issues, to deal in every psychological stress, anxiety, depression, whatever the issue you have. You can visit us, you can book our appointment online, you can go and visit us. Okay, now thank you so much. Thank you. End of this session. Here is now the start of the question and answer session. Over to you, Miss Aliya, to start this question and answer session. Thank you, everyone. Good evening, and thank you so much for joining me. And especially before to go to the mic is go to the Dr. Miss Aliya, I'm just warmly special thanks to our director, Dr. Inayat Ullah, who stood behind us, who gave the opportunity to complete this collectivist family culture and healthy relationships, our workshop to end. And also, I'm warmly thankful, especially thankful to Dr. Khadija Khan, Dr. David, who is joining us from the USA. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, everyone, to join me today, to join me as our first workshop and make this event very smartly and good. And before to end of my turn, I just announce this. We are strongly, inshallah, next 24th of November. Our next event is on the 24th November. I am hopeful to enjoy today's workshop, and the next 24th November of our next event, you will also participate in this all. Over to you, Ms. Aliya. Thank you, everyone. Thank you so much, lovely Marwa, for your insightful words. Ladies and gentlemen, we truly appreciate your attention and participation throughout the session. Okay, everyone, if someone have a question, if anyone have a question, please kindly raise your hand and question. Thank you. Yes. What is the first question? Miss Aliya, इनके mic on कर दें. Kindly turn on the mic, Miss Aliya, who is questioning me. उनका हैंड आपने डाउन कर दिया. Turn on the mic, who is questioning me. Kindly, if someone can ask any question, please raise your hand and ask your question. Turn on your mic, please, everyone. Yes, ma'am. Tell me your name and what is the question. Hey everybody, Assalamu alaikum. This is Samia Khwaja from Sialkot, and Miss Marwa, I hope you remember me.
and I'm here to Welcome, Sam. congratulate you for such a good presentation on a huge topic. It is something which is Ma'am, not I a. cannot hear your voice properly. Kindly Hello. speak. Can you hear me? Yeah, Am I audible louder. now? Hello. Hello. Am I audible? Yes, I can hear you. Yes, Assalamu alaikum. This you're is audible. Samya here. Samya Khwaja. I'm a consultant clinical psychologist and I'm a colleague and a junior to Miss Marwa. Miss Marwa, I'm here to congratulate you for sharing the knowledge and that too on a very vast and a wide You're subject. not audible properly because I can hear you. Okay, if any another one have a question, please raise your hand and you can ask the question. We have a 30 minutes. Yes, ImarhkMI, please turn on your mic and ask the question. Assalamu And please alaikum. speak loud. Ma'am, can you hear me? Assalamu alaikum. Ma'am, can you hear me? Miss Seema, I cannot hear you. Um, Yes, I can hear you. okay. I have Miss a Aliya, question. इनका mic I turn think on Ma'am कर. Marwa cannot hear me. I can hear her. Should I Miss continue or should I wait Yes, for Yes, her? Miss Seema, please, you can repeat. Can you please repeat your question? Yes, sure. Yeah. Okay. So my question is that usually we as youngsters we grow up in a family that has like those strong cultural values that they just have to follow because that's what they have learned. उनको पता है कि हमने यही करना है follow because हमारे बाबा अजदाद ने यही किया था. Mm-hmm. But the new generation has learned that not everything works. In that way there are different ways to do things. There are certain ways that work for us differently, and we also want to do things differently, but in when we are in our family, we are under our parents supervision, we cannot do everything that we want. We always need to have their approval, and sometimes we do not get that, unfortunately, even if we are on the right side. So mostly people in this situation might think that when we grow older and when we become, parents, or when we get married, we will create a family that does not have these kind of, you know, issues that we are facing right now. But also, like, if you have that kind of, if you have those kind of plans, but sometimes जब आप लोगों का रिश्ता होने वाला जो प्रोसेस होता है उसमें आपके पेरेंट्स ही मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आजकल भी ऐसा होता है कुछ फैमिलीज में कि जो लड़की जिसका रिश्ता हो रहा होता है उसकी चॉइस को पूछा तो जाता है. इस बस चॉइस पूछने के नाम पर हम ये कहते हैं कि हमने उससे पूछा कि तुम्हें पसंद है या नहीं. हाँ, उसके साथ जो बाकी चीजें जो उसने डिस्कस करनी है, जो वाकई मैटर करती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कल्चर में नहीं डिस्कस की जाती, वो उसकी उनको जो है ना नहीं दी जाती, स्पेस नहीं दी जाती वो डिस्कस करने की. सो हाउ डज वन प्रेजेंट देयर सेल्फ लाइक इन अ वे कि पता चले कि उसकी पर्सनैलिटी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर फैमिली का जो माइंडसेट है, फैमिली का जो तौर तरीका है, उससे थोड़ा डिफरेंटली सोचती है ये लड़की. सो देयर इज अ चांस कि वो जब दूसरे घर में जाएगी तो शी माइट क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. जरूरी नहीं है वो भी वैसे ही सोच रखती होगी जिस तरह उसके पेरेंट्स या फैमिली वाले रखते हैं. सो आर देयर एनी टिप्स कि हम कैसे अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें, बिकॉज वी प्रेजेंट आवर सेल्व्स वेरी लाइक एक नॉर्मल तरीके से, बट हमारी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो कि फर्स्ट मीटिंग में अगर पता ना चले तो फिर वो इंसान कुछ और अज्यूम कर लेता है हमारे बारे में. सो इज देयर एनी लाइक काइंड ऑफ कोई ट्रिक हो जिससे हम अपनी फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेकंड थर्ड मीटिंग में अपनी पर्सनालिटी के मेन पॉइंटर्स को इस तरह से प्रेजेंट कर सके कि दैट गिव्स अ होल लाइक फ्रेमवर्क टू दी अदर पर्सन कि हमारी क्या मतलब माइंडसेट क्या हमारा, और हमारा माइंडसेट डिफरेंट है हमारी फैमिली से, इस चीज को शो कर सके. Okay. Thank you so much for asking this question, Miss Seema, and thank you for joining us tonight. Your question is how we present us in front of the family member, in front of our family values, and how to understand someone and present our personality. Like, who can understand? What is the tip? The first tip is the communication skills.
You have to understand your communication skills. And the second is your body language. How you present someone, how you can ask the question, how you can sit behind, how you can walk. This, your body language, your body cues and language. Like this, I'm just communicate with you, I'm just nodding my head, I'm just shaking my hand, I'm just talking, this all. And these body language, your personality, your body language, and your communication skills really helpful to understand anyone and to present yourself as a good person, as in the front of the family member. And your second question is how we can understand, how we can present ourselves to deliver to our parents what is our choice. Unfortunately, in Pakistan and in the Western society as well, we cannot deliver these issues properly. We cannot deliver to help these issues to understand, to deliver these such issues to our parents, our elders, our forefathers. Because what as youngsters, what we want, what we can handle these issues. So this is the best way to deliver yourself. The best way to deliver yourself, you have to communicate properly. You have to, behave properly, and you have to focus on your personality. If you cannot focus on your personality, if you are not strong, if you're not economically strong, if you're not independent, and if you are not, its dependency is not like that, because its medicine is not like that you are present yourself to working woman. No, if you are a housewife, if you're a house girl, that's not a big deal. But you have to present yourself as a strongest person. If you say no to anything, no to anyone, you have to say no once. Never change your statement. If you say yes, you have to stand on your statement and just face these all. And unfortunately, in our cultural values, in our Asian culture, this can be not in a humble sense. And thank you. Hope your question is done. If anyone next to his question, and please, before to ask the question, and just give a one statement that please shortly ask your question, because we have a time is short. Next, please. Please, if anyone have a next question, please raise your hand and you can ask. Dr. Rubina, you asked before this. I cannot hear your question. Can you please repeat it again if you ask the question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can hear you now. You're audible properly. Yes, ma'am. मैं कुछ चीजें जो है वो पूछना चाहती हूँ, जिससे हमें यहाँ पे आप ना थोड़ा सा बस ऊंचा बोलें, थोड़ा सा लाउड बोलें. आपकी आवाज आ रही है? मे बी आपने अपनी वॉइस लो की हुई है. मैम मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे अक्सर जैसे कि यही बात हुई कि हमारे पेरेंट्स उसको हमारे जो लाइफ पार्टनर को डिसाइड करते हैं, उसको सारा चूज करते हैं, वो चीज हो जाती है. तो मेरे पास यूजुअली जो बच्चियां आती हैं वो ये कहती हैं कि हमें तो नहीं पता था ये कैसे हैं, किस तरह से, अच्छे भी हैं, लेकिन हम इन्हें हमारी क्योंकि जो डिजायर्स थी आगे बढ़ने की, स्टडी करने की, वो नहीं हो पाई. तो लेकिन अब हमारा रिग्रेट जो है वो अपने हस्बैंड के साथ, हम उसको टच नहीं करना देते, हम उसको लाइक नहीं करते, लेकिन 30% हम उनको अलाउ भी करते हैं कि ठीक है चल रहा है. कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि चले जो हो गया हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन साथ ही हमारे लिए फिर भी मेंटली हम उस चीज के लिए सेटिस्फाइड नहीं है. तो इसके लिए क्या सजेशन हो सकती है? Thank you so much, Ms. Rubina. Thank you for joining us tonight. And your question is really very, very good. Your choice is good for the question. The answer is, if cannot handle their relationship issues, if cannot handle the couple issues, husband's likes and dislikes, in-laws issues, firstly, Rajni, you have to visit our coach therapist. Our team is here to helpful everyone. If someone have an issue to handle the husband, the partner, and the life partner, you have to visit for the consultation, because there are so many issues that girl can feel in a marriage. The first is, the most important issue is the fear of sex, fear of relationship. How to manage the husband, how to handle this, how to present herself in a physical relationship, how to present herself in a physical relationship. So that's the fear, is really, the sex fear is really, really high. And it's in a Pakistan, it's an upcoming threat, because
girls cannot understand what she can present, what the husband want, and how she understand this. Before to end of your conclude your question, I'm just explain everyone. Our director, Dr. Inayat, have a book, written book on the book of the orgasm, because if someone wants to understand how he or her or his body present, how his or her body perform, you have to read this book. And Dr. Rubina, you have to send this book to, you can purchase us and you can send this book to your patients, your young girls and your everyone, because this book will be helpful to answer the most of the question. But unfortunately, it's not the end of the help. You have to visit the therapist coach, you have to visit the psychologist, you have to visit the sexologist, and then your issue will be solved. Unfortunately, there are so many fears behind this all the issue. Thank you so much for the question. If someone have a question, if anyone have a question, please raise your hand if anyone have a question. And Dr. Rubina, kindly mute your mic. Thank you so much. Okay. If anyone have a question, please, you can ask. Yes, there is a question. Yes. I wanted to ask what type of training Sorry, Miss Aliya. is needed on the side of therapy to handle Okay, your question is, drivers. okay, what is the therapy to helpful in this situation, in the family culture and values? The first is the counseling, and the second is mindfulness test technique. Mindfulness test technique is really, really matter. Inshallah, our next workshop is on such topics. Our next workshop or next workshop on such topics. So thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone, for to joining us tonight. Can you, if someone can ask the question, please, Miss Aliya, if anyone have a question, because I cannot see if anyone have a question. I wanted to ask. Sorry, we cannot reply on a Type of, yeah. okay. Yeah. Any more questions, anyone? Yeah. If someone can ask the question, please ask in your mic. Do not written your question, because I cannot read the question right now. Miss Aliya, if someone have a question on a written form, please give it to me by name. Miss Aliya, please give Okay, the so, yeah. all right. Yes. Can I Someone ask forward one me more question? the question Yes. that what type of training Mm-hmm. is needed on the side of therapists to handle such diverse population with diverse issues with Mm-hmm. respect to culture and values. Okay. The counseling, who is he or she? Can you please repeat his name? Miss Aliya, It's someone with iPhone. No no issue. identity is written. No issue. The question is, the someone can ask the question. You all of them to hear this question. The treatment and the therapeutic treatment is really, really helpful to understand the diversity of your issues, to understand the cultural values, and the couple counseling, especially family and couple therapy is really important, and the counseling is important. It's really helpful to understand the cultural values. We, as a clinical psychologist, I deal with so many patients in a group therapeutic treatment and in a counseling session. Counseling session is really helpful. Group therapeutic treatment is really helpful. Mindfulness stress technique is really helpful. These are such techniques, but you cannot handle these techniques. You cannot handle to apply the techniques on self by self. You have to visit the psychologist. You have to visit the therapist, and then you can take a helpful to understand these issues. Thank you so much. Thank you for the question. Ms. Aliya, over to you. Thank you so much, Ms. Marwa, for your insightful words. Ladies and gentlemen,
We truly appreciate your attention and participation throughout this session. Thank you once again to each and every one of you for being a part of today's event. Your time, your engagement, and your willingness to learn mean a great deal to us. I would also like to express my sincere gratitude to our senior team for their commitment is truly backbone of every successful event we host.